Welcome to my channel. Today I'm gonna show you how to make a gown. इस ड्रेस को बनाने के लिए आपको एक प्रिंटेड कपड़ा अपनी चॉइस का लेना होगा और अस्तर के लिए ब्लैक केबीसी कपड़ा लेंगे और एक ब्लैक चेन। सबसे पहले हम इस ड्रेस का टॉप रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने एक चार्ट पेपर लिया हुआ है ताकि इसमें मेजरमेंट काट सकें। इसके लिए हम इसके सारे मेजरमेंट यहाँ पर स्क्रीन पे आपको शो कर देंगे। यहाँ पर शोल्डर, बस्ट और वेस्ट दिया हुआ है, जिसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और उसे मिला लेंगे और किस तरीके से कटिंग करना है लेट मी शो यू। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways. अब हम इसमें आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अपने साइज के हिसाब से आप इसमें आर्म होल बना लेंगे, इस तरीके से कर्व बना लेंगे और उसके बाद वैसे ही इसे फॉलो करके काट लेंगे। इस ड्रेस की टॉप को हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि एक प्रिंसेस कट है और इसकी वी नेक है। अब इसकी डीप वी नेक बनाने के लिए कंधे की चौड़ाई 1 इंच से छोड़कर बस्ट लाइन पर ½ इंच छोड़ देंगे। अब बस्ट लाइन से जितना भी डीप करना चाहें वहां से टिक कर लेंगे और अब सभी टिक को आपस में जोड़ के काट लेंगे। प्रिंसेस कट बनाने के लिए कंधे के इनर पॉइंट से मिडिल चेस्ट पॉइंट मेजर करके टिक कर लेंगे। अब आर्म होल के 1/3 पॉइंट में टिक कर लेंगे। अब दोनों ही टिक को आपस में मिला लेंगे। नाउ मिडिल पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन वेस्ट लाइन पे ड्रॉ करेंगे। नाउ एज यू कैन सी इन द वीडियो, आर्म होल से ½ इंच एंड वेस्ट लाइन से भी ½ इंच छोड़कर ड्रॉ कर लेंगे एंड देन इसे काट लेंगे। फिर अब फ्रंट की कटिंग रेडी हो चुकी है। इसके हिसाब से फैब्रिक काट लेंगे। मेक श्योर कि बॉटम की कटिंग पहले कर लें, फिर रिमेनिंग फैब्रिक में इसी कटिंग कंप्लीट कर लें। अब ये मोटे कपड़े में प्रिंसेस कट कर चुका है। ऐसा ही कटिंग डबल करेंगे और मेन कपड़े में भी ऐसी ही कट बना लेंगे बिल्कुल। ये अस्तर और कपड़े को मैंने पिन अप कर लिया है। अब इस दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। नाउ द प्रिंसेस कट इज रेडी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है टॉप का। अब हम नेक को प्रेस कर लेंगे जिसे सिलने में आसानी and
अब वी नेक के अंडरनीथ के लिए 8-8 इंच के 2 स्क्वायर कपड़ों को काट लेंगे और उन्हें आपस में जॉइन कर लेंगे। देन उसके बाद उसे प्रेस कर लेंगे। अब इस स्क्वायर कपड़े को डीप वी नेक में मिड पॉइंट में Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. अब ये टॉप का फ्रंट हिस्सा पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम टॉप का बैक हिस्सा काटेंगे। इसके लिए चार्ट पेपर को मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। पहले की तरह बिल्कुल वीडियो में बताए गए तरीके से हम करेंगे और इसमें हम वी नेक के लिए जितना आपको डीप रखना है उसे आप मार्क कर लेंगे। मैंने फ्रंट का ही यूज़ किया है इसमें मार्क करने के लिए। वैसा मार्क करके आप वी रख लेंगे और इसके शोल्डर की जो लेंथ है जो सामने रही वही। इसमें थोड़ा डिफरेंस ये रहेगा कि इसमें पीछे एक प्लेट डालनी है, 2 प्लेट डालनी है, तो उसको आप अपने हिसाब से वीडियो का अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इस तरह से हम पेपर की कटिंग के अकॉर्डिंग कपड़े और अस्तर दोनों को ही काट के आपस में We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on अब ये बैक रेडी हो चुका है जिसमें वी नेक है और इसमें बीच में जगह है जिसमें हम चेन लगाएंगे। चेन का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, देखें इस तरह से। we'll grow in number, fueled by them to see अब हम इस सिले हुए हिस्से में चेन को जोड़ेंगे। us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to ये पिन से पूरी तरह फिक्स हो चुका है। अब इसे मशीन से सिल लेंगे। we'll go. नाउ दिस इज टोटली अटैच्ड एंड मेक श्योर कि ये बहुत स्ट्रांगली अटैच ना हो क्योंकि हमें इसे खोलना है। अब हम एक नाइफ की हेल्प से इस सिलाई को सावधानी से खोल लेंगे जिससे कि चेन पे कट ना लगे। नाउ यू कैन सी दिस कि चेन कितनी फाइन तरीके से अटैच हो चुकी है और बाहर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the waste. नाउ वी गो थ्रू द बॉटम कटिंग। इसके लिए हम कपड़े को 90 डिग्री में रख लेंगे और मेक श्योर कि ये ऑरेंज वाला हिस्सा इसमें आने न पाए, वो सिलाई में दब जाएगा। ध्यान रहे कि ये कटिंग जो है सिर्फ सामने के हिस्से के लिए है, पीछे के लिए ऐसा ही एक और कटिंग करेंगे जिसकी ज़्यादा घेर आ सकती। इसके लिए 38 इंचेस हमने लिया है। इसे 38 मेज़र करके वेस्ट से बॉटम तक मार्क कर लेंगे पूरे एरिया में। इस तरह से हमारे बॉटम की कटिंग हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसके अस्तर की कटिंग कर लेंगे, बस कपड़ा जो है वो 90 डिग्री का होगा। अब बॉटम और अस्तर को साथ में जोड़ लें। Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting
अब टॉप और बॉटम को पिन की हेल्प से अटैच करके सिंक कर लें। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी सिंक कर सकते हैं। turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ना बॉटम के हिस्से में ज़रा स्लिट लगा लें और चेन के बचे हुए हिस्से को इसमें ऐड कर लें। And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us. अब बॉटम की एज के लिए हम हेम का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो हेम लगा भी सकते हैं और विदाउट हेम भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बोट टाइप की क्लिप दिखाई हुई है। Turn us to that